Good afternoon, ma'am. We are going to start with a new topic, that is curve tracing. Right? As we discussed last time, we are going to start with a new topic, that is curve tracing. So curve tracing is very important and is used. It is very important part of maths, and it is basically used to know the shape of the curve. ठीक है कि कर्व कैसा है, और कर्व की शेप फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे और उनको नोट डाउन करेंगे. ठीक है. तो अब हमें कर्व की शेप फाइंड आउट करने के बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उस कर्व का एरिया फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम जो उस कर्व से सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, या सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशंस का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है. What do we mean by solids of revolution? These are some of the applications that we are going to study for this curve tracing. ठीक है. So now what we are doing is we are going to do the tracing of Cartesian curves. ठीक है. तो first we are going to study the various characteristics to find the shape of the curve from the given equation. हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन गिवन होगी और उससे फिर हमें कहा जाएगा कि कर्व ड्रॉ करो. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सिमेट्री ऑफ अ कर्व. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी कि कर्व जो हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम होता है, एक सेकेंड, आई विल शेयर द स्क्रीन. Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो हमारे पास ये कार्टेशियन, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक ये आ नहीं रहा. एक सेकेंड. I hope the screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हमारा कर्व किस किस के अबाउट सिमेट्रिक हो सकता है? X-axis, y-axis, or it could be symmetrical to y equals to x. Okay. Origin. So when I'm saying that this is my Cartesian system. This is how I can draw my Cartesian system, where this is my x-axis and this is my y-axis. ठीक है. So if I'm saying that the curve is symmetric about x-axis, so it means it is something like this. Here the drawing may not come out to be very good, but I think we are not going to care about that. So the curve as it looks about on above the x-axis, so it same looks when it is at the below of x-axis. When I am saying the curve is symmetric about the y-axis, it can be like this, or it could be a circle. Is the if the curve is symmetric about the origin, if it is, then how it is going to be? If it is symmetric about both x-axis and y-axis, then it is symmetric about the origin, like a circle passing through, like for example, an equation like x square
plus y square is equal to 9. So this kind of a curve is symmetric about x-axis, it is symmetric about y-axis, it is symmetric about the x equal to y-axis, right? This curve is symmetric about x-axis. This curve is symmetric about y-axis. ठीक है? This curve is symmetric about which axis? Y equals to Y x. equals to x. Y equal to x, right? So we are going to study the various characteristics. और पता कैसे चलेगा that this curve is symmetric about y is equal to x axis? एरिया दोनों की तरफ बराबर होगा। जब आपको कर्व की पोजीशन ही नहीं पता तो उसको पता कैसे चलेगा? आपको तो सिर्फ एक कर्व दिया हुआ है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका एरिया क्या है? मैम हम कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लेके वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो भी एक तरीका है। So now we are going to check some things, some characteristics to find out whether the curve is how to draw a curve and what are the various characteristics of a curve. This is one of the very simple characteristic of the curve of being symmetric. So to check if the curve is symmetric about x-axis, please write it down, all of you, and we all can also keep the videos on. We all can keep the videos on. So to check whether the curve is symmetric about, first characteristic that we are going to study is the symmetry of the curve. The first characteristic that we are going to study is the symmetry of the curve. To check if the curve is symmetric about x-axis, to check if the curve is symmetric about x-axis, if there are only even powers of y. If there are only even powers of y. For example, y square is equal to 4ax. ये कर्व कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला. It is going to be like, right? ऐसा होगा? So this curve is symmetric about x-axis. So if the equation has even powers of y, then the curve is symmetric about x-axis. If the curve has even powers of x, then it is symmetric about y-axis. If the curve has even powers of x, then the curve is symmetric about y-axis. और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? Because हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम y की, एक सेकेंड, अगर हम इसमें y को, if we change y to minus y, so will this equation change? No. It will remain the same. Y square is equal to 4ax. So y चाहे positive हो चाहे वो negative हो, it is going to be same. The behavior of x is going to be same, right? So that is why the curve is symmetric about x-axis. So we can say that if we have even powers of x, then the curve is symmetric about y-axis, and if we have even powers of y, then the curve is symmetric about x-axis. तो अगर हम y को माइनस y कर देंगे इन केस ऑफ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, एंड अगर हम x को माइनस x कर देंगे इन केस ऑफ
in case of being symmetric about y axis. तो जैसे ये है, एक सेकंड, इसकी इक्वेशन क्या होगी? x square is equal to 4ay. 4ay. ठीक है, so this is what you have. एंड जो भी अभी हमने डिस्कस किया था एक सर्कल, उसमें क्या था? x square is equal to, सॉरी, x square plus y square is equal to 9. तो इसमें x की भी इवन पावर्स हैं, y की भी इवन पावर्स हैं, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, राइट? इज दैट फाइन? So Yes, you can ma'am. write down some points: symmetric about x axis, symmetric about y axis, symmetric about both the axes. Then symmetrical in opposite quadrants, symmetrical in opposite quadrants, or about origin, symmetrical in opposite quadrants. For example, जो मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया था, 2 लीव्स वाला, एक लीफ यहाँ पर है और एक लीफ यहाँ पर है, तो दे वर सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स, राइट? इन दोनों में यहाँ पर एक लीफ है और एक यहाँ पे लीफ है, तो ये दोनों क्या है? दे आर सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स. So it is saying that when you have symmetric in opposite quadrants, the equation of the curve remains unchanged. Please write down the equation of the curve remains unchanged when both x and y are changed to when the equation of the curve remains unchanged when both x and y are changed to minus x and minus y. When both x and y are changed to minus x and minus y. For example, xy is equal to c. Now you change x to minus x and y to minus y. What will it become? Ma'am, it will remain xy. It will remain xy. It will remain same, right? So that is why in this equation also, this equation is symmetric in opposite quadrants. Symmetric in opposite quadrants. Either it is symmetric in this quadrant or it is symmetric in this quadrant. Here we don't know which quadrants, which opposite quadrants, which pair of opposite quadrants it is, which pair of opposite quadrants it is symmetric. अभी हमें ये नहीं पता. How to check whether the curve is symmetric about y is equal to x? Ma'am, if the equation does not Interchange x and y. Ma'am, if you interchange x and y. Sorry? I'm not getting what you. मैम x और y को इंटरचेंज कर देंगे. If you interchange x and y, then equation remains same. Yes, the equation remains same if we interchange x and y to check if the 8 seconds. So what you are saying is, if we want to check the symmetry of the curve, about x is equal to y axis, that is this axis, if we want to check the symmetry of the curve, if we interchange the values of x and y, जैसे हमारे पास इक्वेशन है, equation of the circle that we have, x square plus y square is equal to a. So if I interchange the values of x and y,
then the equation of the curve will remain same. For example, y square plus x square, it will not change. The same equation that we took earlier, xy is equal to c. तो अगर यहाँ पर हम x की जगह y लिख देंगे और x की जगह y की जगह x लिख देंगे, then again the equation will not change. It will remain unchanged. So these two are symmetric. These two are symmetric about the x is equal to y axis. Is it symmetric about x is equal to minus y axis? ऊपर वाला होगा, नीचे वाला नहीं होगा। नहीं होगा, राइट। ऊपर वाला होगा। ऊपर वाले में अगर हम x की जगह पे माइनस वाई लिख देंगे और y की जगह पे माइनस एक्स लिख देंगे, राइट। तो सॉरी, सो ऊपर वाला भी होगा और नीचे वाला भी होगा, बिकॉज अगर हम x की जगह पे, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे, इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे माइनस वाई लिख देंगे और y की जगह पे माइनस एक्स लिख देंगे, तो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड. सिमिलरली हियर आल्सो अगर हम x की जगह पे माइनस वाई लिख देंगे और y की जगह पे माइनस एक्स लिख देंगे, तो इट विल अगेन बी अनचेंज्ड, राइट? इज दैट फाइन? Yes, ma'am. मैम लेकिन इसका Similarly, मतलब Yes, ma'am. so let's have इक्वेशन another चेंज नहीं equation. होनी चाहिए कि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। Right, कर्व the को value of the हमेशा equation should not, the RHS should remain unchanged. अनचेंज होगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं इक्वेशन आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए ना। इक्वेशन अगर आपने y की जगह पे माइनस एक्स लिखा, आपकी ओरिजिनली इक्वेशन क्या थी? ओरिजिनली इक्वेशन आपकी ये थी, आपने x की जगह पे लिखा माइनस वाई, y की जगह पे लिखा आपने Yes. माइनस एक्स। ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई? xy xy equals to c. is equal to c. Your equation is same. ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यस मैम। y प्लस, मैम लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द इक्वेशन इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अभी आप रुकिए बेटा, अभी आपको क्रक्स पता चलेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, इज दिस इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x? Is this equation symmetric about y equal to x? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How? नो मैम, मैम जहाँ वाई स्क्वायर होता तो हो जाता y शायद। डाल देंगे, क्योंकि अगर आप XY y, के- सॉरी, हाँ, अगर y स्क्वायर होता तो देन दिस वुड हैव बीन हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी आपके पास y स्क्वायर नहीं है। What you have here is y plus x square plus xy is equal to 0. So this is not symmetric about x is equal to y. ठीक है? अभी आप पहले सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, देन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन यूज दीज थिंग्स टू प्लॉट अ कर्व। अभी हमें कर्व को ट्रेस या प्लॉट करना है, तो कर्व की ट्रेसिंग और प्लॉटिंग हम कल करेंगे। पहले आज हम सारे पॉइंट्स लिख लेंगे।
ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, दैट इज अबाउट द सिमेट्री. यू जस्ट हैव चेक द सिमेट्री ऑफ द कर्व. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट, और जो आपने सिमेट्री का लिखा है उस सिमेट्री के अंदर यू हैव रिटन अबाउट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, सिमेट्री अबाउट symmetry in the opposite quadrants, and symmetric about y is equal to x, and symmetry about y is equal to minus x. ठीक है, is that fine? These are the points, these are the sub points that you have written for symmetry. Next point is passing through origin, whether the curve is passing through origin or not, and the tangents at the origin. Please write down. The second point is passing through origin, and whether the curve is passing through the origin or the tangents, or do we have any tangent at origin. So the only way to check whether the curve is passing through the origin or not is that if there are no constant term in the curve's equation, if there are no constant terms in the equation of the curve, then the curve passes through the origin. Then the curve passes through the origin. ठीक है, does this pass through? Does this curve pass through the origin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Does ma'am. this curve passes through the origin? No, ma'am. No, No, ma'am. no, No. ma'am. Does this curve passes through the origin? No. No, ma'am. No, ma'am. And that's okay. So we have some equations that passes through the origin. We have some curves passing through the origin and some curves and that are not passing through the origin. Is that fine? Ma'am. हाँ जी. Ma'am, x minus 2 का whole square plus y square equals to 2. एक सेकेंड, इतना फास्ट मैं नहीं कर पाऊंगी. आप एक बार दोबारा बताएंगे कर्व को. X minus 2 whole square plus y square equals to 4. आप बताइए. आप बताइए क्या हो जाएगा. एक्स स्क्वायर हम पास माइनस करें. 4x प्लस It 4. will pass. हम It पास will करें. pass through, right? It will pass through because 4 will get cancelled. 0 को वहाँ 0 पे वैल्यू ठीक आ रही है. ठीक है. So this curve will pass through the origin. If the curve passes through the origin, to find the equation of the tangent to the curve, अगर कर्व, अब मेरा कर्व जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, जैसे ये इक्वेशन है, दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब मुझे ये चेक करने के लिए वेदर द व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब इसका फायदा क्या है कि हमें टैंजेंट की कर्व पास कर रहा है या नहीं. अब इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि सपोज the tangent's equation is something like this. The equation of the tangent is something like this. So we can say that the curve is passing through like this, or the curve is passing something like this. ठीक है, अगर tangent अगर आपकी x axis होती है तो उस केस में कर्व कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या फिर वो ऐसा होगा, है ना. इज इट क्लियर? तो कर्व की जहां पे कर्व अब जहां पे कर्व हमारा टैंजेंट, अब सॉरी, अगर हमें ये पता है कि कर्व मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करने के बाद मुझे ये भी पता है कि जो उसकी टैंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने से आई कैन फाइंड द शेप ऑफ द कर्व, राइट. सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, sorry, to find the equation of the tangent,
passing through the origin. So if the curve, please write down, all of you please write down, if the curve is passing through the origin, if the curve is passing through the origin, to find the equation of the tangent to the curve at the origin, to find the equation of the tangent to the curve at the origin, equate to zero the lowest degree terms in the equation of the curve. Equate to zero the lowest degree terms in the equation of the curve. ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं. y is equal to, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले कर तो लिया करो, फिर क्वेश्चन पूछा करो. मैम सबसे सिंपल क्या, मैम आप प्लीज क्लियरली बोलिए. मैम रिपीट. I said that if to find the if the curve is passing through the origin, to find the equation of the tangent to the curve at the origin, equate to zero the lowest degree terms in the equation of the curve. जीरो को हमें क्या इक्वेट करना है? Equate to zero the lowest degree terms in the equation of the curve. अगर आपका कर्व की इक्वेशन ये है y is equal to 4ax. So what is the lowest degree here? 1. That किसकी is है? किसकी है वो x. lowest degree? X. तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? X equals to 0. x equal to 0. और ये किसकी इक्वेशन है? आपको पता है ये y is equal to Y axis. सॉरी y square is equal to 4ax किसकी इक्वेशन है? Parabola. Parabola. And we know that it is passing through the Origin. origin. और इसकी tangent क्या है? Origin पे. Y axis. Y axis. That is what I said. Similarly, for x square is equal to 4ay. है ना? Is it fine? Yes, ma'am. इसमें क्या होगा? What is the tangent at origin? Tangent Y at equals to 0. sorry, tangent Y to the equals to curve. 0. Y is equal to 0. So the tangent to the curve at origin is y is equal to 0, which is the x-axis, and we know that for the curve, this is the tangent to the curve at origin. Is that fine? Yes, ma'am. So these are some of the easy examples that I have taken. For example, if I now take मैम sin x. अगर हम ये कर्व लेंगे, first of all you tell me, is the curve passing through origin? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So the curve is, yes, the curve is passing through the origin. What is the equation of the curve? Sorry, what is the equation of the tangent to the curve at origin? X minus Y equals to 0. Or I can say x is equal to y, Y. right? So when I have, this is my Cartesian plane, and I know that this line is the tangent to the curve passing through origin. Tangent to the curve at origin. So I can easily define कि मेरा curve कैसा होगा यहाँ पे. It will be something like passing something like here. It is going to be like here, something at least here. ठीक है? अभी हम बहुत सारे characteristics देखेंगे और उसकी हेल्प से हम अपना कर्व ड्रॉ कर पाएंगे. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस जो आपने ये ऊपर इक्वेशन लिखाई थी y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इसकी क्या आएगी? एक सेकेंड, कौन सी इक्वेशन? y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यस मैम। इसकी डिग्री क्या है? एक्स वाई की क्या होगी? एक्स वाई की 2 होगी, x की 1 y की 1, तो डिग्री इज 2, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज y इज इक्वल टू 0, दैट इज द x axis, x axis इज द टेंजेंट, ठीक है? ओके मैम। So we equate to 0 the lowest degree terms in the equation of the curve. Fine. So now we have to, what do we have to find? We have to find whether the curve lies above the tangent or below the tangent. अगर मैम हमारे पास, हाँ जी, मैम अगर कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो इसमें 0 है आंसर, इसमें तो कोई टेंजेंट है ही नहीं। मतलब अभी देखेंगे, अभी आप देखेंगे, इसका भी देखेंगे आप। जैसे एक्स क्यूब है उस पर भी टेंजेंट नहीं बनता, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। अभी रुक तो जाइए बेटा, अभी करेंगे, आप इसका भी करेंगे, ठीक है? So write down. So if there is only one tangent, write down next point. If there is only one tangent, find whether the curve lies below or above the tangent in the neighborhood of the origin. अब हमें पहले ये फाइंड आउट करना है जो tangent है हमारी, अब जो हमारी टेंजेंट है उस कर्व उसके ऊपर है या कर्व उसके नीचे है, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि हमारे एक सेकेंड, now we want to check कि अब जैसे हमारी ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे जो कर्व है हमारा, वो कर्व ऊपर आएगा या वो कर्व नीचे आएगा, ठीक है? तो दिस यू हैव टू फाइंड। नाउ you have to next find if there exists 2 or more tangents to the curve at origin. Whether we have 2 or more, please write down. If there exists 2 or more tangents to the curve at origin. To find out if there exist 2 or more tangents to the curve at origin. For example, जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि if I have an equation of the form x square plus y square plus xy, एक सेकेंड, x square plus y square plus xy, इसमें कितनी टेंजेंट्स होंगी? इसमें लोएस्ट डिग्री क्या है? टू। इसमें लोएस्ट डिग्री इज 2, राइट? तो इसमें क्या करेंगे हम? इस पूरी इक्वेशन को उठा के किसको इक्वेट कर देंगे? इक्वल टू 0। अब हमारे पास ओरिजिन पे कितनी टेंजेंट्स आएंगी? 2 आएंगी। अब दोज 2 टेंजेंट्स कैन बी रियल, दे कैन बी इमेजिनरी, ठीक है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैम एक्स Yes, और वाई sir. की तो 1 डिग्री है क्या मैम, जो एक्स वाई मैम जो साथ में है।
बेटा इसकी आप एक टर्म की डिग्री देखते हैं या सिर्फ अलग अलग चीजों की डिग्री देखते हैं? ये एक टर्म है ना, यस मैम। फिर इसकी डिग्री कितनी है? मैम 2। फिर now we have to check whether there exists 2 or more tangents to the curve at origin. Then the origin is a multiple point. Then the origin is a multiple point. ठीक है? Now the origin is called a node, cusp or an isolated point. The origin is called a node, cusp or a isolated point. The node is called a cusp. The origin is called a node, cusp or a isolated point. According to the tangents are real and distinct. Node होगा अगर हमारा real and distinct. If the two tangents are real and distinct. Real and coincident. Then it is a cusp. And if they are imaginary, then the origin is called as the isolated point. ठीक है? For example, अगर आपके ये 3 कार्टेशियन सिस्टम्स हैं, I'll just show you the examples of the curves. अब मुझे इसके अंदर बताइए कि tangents क्या होंगे? इसके अंदर tangents क्या होंगे? Whether this okay, my first question is whether this curve passes through the origin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Curve passes through the origin because there is no constant point, right? Now, what is the equation of the tangent? What is the lowest degree term here? X. X square and Y y is equal to square. plus minus. 2 So the lowest degree term will come out to be here. The equation of the lowest degree term will come out to be here is a square y square minus a square x square, which is equal to y square is equal to x square, right? Is that right? Yes, ma'am. So what are the two Yes, ma'am. tangents here that you can have here? Y is equal to plus minus x. Y is equal to, that is y is equal to x and y is equal to Minus x. minus x. So these are the two tangents, and these two tangents are your real and distinct tangents. So this point, this origin is a, which point it is? Which kind of a point it is? Is it a node, cusp or isolated? Node. It is a node. Node. Right.
Node. Now, uh, for an equation like y square minus x cube is equal to 0, does this curve passes through origin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. passes through origin. What is the equation of the tangent passing through? What is the equation of the tangent to the curve at origin? Y square equals to Y 0. equals to 0. Y square is equal to 0. How many tangents are there going to be? 2. Only one. One. 2 tangents, but they are real and coincident. Coincident. The 2 tangents are y is equal to 0, y is equal to 0, and they are coincident. Is that fine? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is, I'll just show you the shape of the curve that this is going to be. So this is the origin is going to be a cusp. Okay. The curve is basically like this. The curve is something like this. ठीक है, bend यहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा, so it is going to be like this. So this curve has a tangent. This curve has a tangent, and they both are sorry. So this curve has a tangent, and this curve has a tangent, and both of these tangent are the x-axis. ठीक है? Is it fine? Yes, ma'am. Okay. Similar curve can be like, ऐसा एक और कर्व देखते हैं, एक ये कर्व है एंड एक ये कर्व है, ये लाइन नहीं है, ठीक है, एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ठीक है, इन दोनों की टैंजेंट क्या है? इसकी टैंजेंट क्या है और इसकी टैंजेंट क्या है ओरिजिन पे? Y equals to 0. Right, y is equal to 0. So what we have here is दिस इज अगेन अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा कर्व ड्रॉ हो सकता है? नाउ यू विल सी दैट दीज टू दैट दिस कर्व जो हमने बाद में ड्रॉ किया इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस. द कर्व दैट वी ड्रू अर्लियर इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट द एक्स एक्सिस, but they both have the tangent, they both have the x axis as tangent to the curve at origin. Right? Right? Yes, ma'am. So now next let us have another curve. X square y square is equal to a square x square y square plus like this. So if I have this curve, does this curve passes through the origin? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now find the equation to the equation of the tangent to the curve at origin. X square plus Y square equals to 0, but tangent is not possible. It is imaginary. It is imaginary. X is Imaginary. equal to plus minus I y. Right? Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this tangent is imaginary. The curve is not touching this equation is going to be something like ठीक है.
Is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे कि एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आगे जब हम एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। तब आपको पता कैसे चल गया कि अगर हमारे पास I hope now you get to know that if we have multiple tangents at origin to the curve, then they can be coincident, they can be real and distinct, they can be imaginary, right? Sorry, are you trying to say anything? So now next thing is to find the intersection with the coordinate axis. How do you find the intersection with the coordinate axis of the curve? Ma'am, we put x or y in एक the बार x को equation and 0 then we करना get a y को quadratic 0 equation. Right. So we will अगर हमें ये देखना है कि वो x axis के को coincident है या नहीं, मतलब उसके थ्रू पास कर रही उसे सॉरी इंटरसेक्शन है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए we will put y equal to 0 and then we will find the value of x जहाँ पे वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर y एक्सिस से चेक करना है तो we will put x equal to 0 and find the value of y for which the curve is intersecting the y axis. Now to find the tangents to the curve at these points of intersection with the coordinate axis, क्या करेंगे हम? क्या करना चाहिए? जैसे हमने ओरिजिन पे किया हम वैसे ही करेंगे, पर क्या करेंगे हम? ओरिजिन वाला काम किसी और पॉइंट पे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, राइट? हम अपने ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे पहले। वी विल फर्स्ट शिफ्ट द ओरिजिन टू द रिक्वायर्ड पॉइंट and then equating to 0 the lowest degree term, we find the equation of the tangent at that particular point to the curve. Is that fine? Suppose जो मेरा कर्व है, एक सेकेंड, suppose this is my system and this curve is intersecting here. Y square is equal to 4ax minus 3. एक सेकेंड, राइट, ठीक है। यही होती है ना इक्वेशन इस वाले कर्व की, या कुछ और होगी? मैम यही होगी। यही होगी ना? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इक्वेशन टैंजेंट की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर इक्वेशन की टैंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम वही काम करेंगे हम जो काम ओरिजिन पे करते हैं। वी विल शिफ्ट द कर्व और वी विल शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ठीक है? वी विल शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस पॉइंट एंड देन वी विल फाइंड द टैंजेंट ऑफ द कर्व। तो अब हमने क्या किया? हमने ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? कितने पॉइंट्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे? 3 पॉइंट्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू x प्लस 3. सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 4ax, राइट? Yes, अगर हमारा ओरिजिन यहाँ पर होगा तो हमारी इक्वेशन क्या होगी टैंजेंट की? y इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, y इज इक्वल टू y equals to 0. पर हमने जब टैंजेंट को शिफ्ट किया था, एक सेकेंड,
सॉरी आपकी जो टेंजेंट आएगा वो ये आएगा ना, टेंजेंट तो x इज इक्वल टू 3। मैम x-3 नहीं लेंगे? x-3 कैसे लोगे बेटा? फिर इक्वेशन ही आपकी कैसे हो जाएगी? तो x-6 हो जाएगा यहाँ पे। नहीं मैम, बड़ा वाला x क्या है? हाँ ठीक है मैम। है ना, इसको आपको जीरो करना है ना, इसके अंदर इसको जीरो करना है आपको। यहाँ से 3 कांस्टेंट हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, अपना ओरिजिन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन को यहाँ पे आपने शिफ्ट किया तो आपको x इज इक्वल टू x+3 कर दिया, राइट। और y को क्या करोगे? y को क्या करोगे? मैम y तो सेम ही है। y एक्सिस भी तो इधर आ जाएगा राजे। y एक्सिस विल आल्सो शिफ्ट हियर ना। x का तो आपने इधर से शिफ्ट कर दिया, y को भी तो शिफ्ट कर दिया आपने। इस वाली एक्सिस को भी तो उठा के मैम आपको y अगर तो शिफ्ट हो रहा है, x तो वही है। बेटा एक सेकेंड, अगर आपको आपका ओरिजिन ये है, ठीक है, और आपको अपना ओरिजिन यहाँ पे बनाना है, तो आई विल शो यू हाउ। आपका अगर जो x एक्सिस है, x एक्सिस पहले इस लाइन पे, x एक्सिस आपका इस लाइन से इस लाइन तक है, आपको इसको आगे शिफ्ट करना है। तो दिस पॉइंट विल आल्सो कम हियर। ये तो आपने शो कर दिया x इज इक्वल टू x+3 से, ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि पहले आपका पॉइंट जो आपका x एक्सिस है वो सिर्फ इतना है, ठीक है। जब आपने इसको इतना शिफ्ट किया तो जो ये निब वाला पॉइंट है ये यहां पर आ जाएगा। आपने x एक्सिस को शिफ्ट कर दिया ना। अगर आपकी इनिशियली आपकी x एक्सिस यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। आपने जब इसको शिफ्ट किया तो दिस पॉइंट, तो आपकी x एक्सिस ये बन जाएगी ना, जो पहले ये थी विल नाउ बिकम दिस। और जो y एक्सिस है, दिस y एक्सिस विल कम हियर, द ओरिजिन विल कम हियर। तो y will remain same, y is equal to 0 and x will become x is equal to x+3। Ma'am, x-3. y x-3। Okay, we'll do this next time. We'll do this next time. ठीक है, it's 1 o'clock. Probably you have a next class, so we'll do this next time. Fine. Is that fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.